subscribe and press this bell icon to never miss another lecture video. Hi, welcome to GATE ESE lecture. We are in lecture number 15 of signal system. Now this is your discrete time signal module, and here we are going to discuss about couple of questions from sampling subject. Well, in the last video lecture I left you from this concept. It's a very beautiful and very interesting concept. We are going to solve a very simple like basic question from this concept, and from the drawback we're going to analyze the drawback of Nyquist rate. What is a Nyquist rate? We're going to discuss about all these things. Now let me start our analysis from the portion where I left. Basically what it says कि two discrete time sinusoidal signal of frequency f1 and f2 will alias if your sampling frequency is f1 minus f2. If your sampling frequency is f1 minus f2, that means if your sampling frequency is a multiple of f1 minus f2, so that will be responsible for your alias effect. Alias is what? Alias is nothing but infinite range of continuous time signals is representing can be represented in a discrete time format. I told you na in the last video lecture, infinite number of high frequency continuous time signals will be represented by a single discrete time signal. That is nothing but your alias. I'm not talking about aliasing effect, I'm talking about alias. So for alias you need to remember this concept that your sampling frequency, the frequency with which that you are going to sample, that sampling frequency, it has to be a multiple of f1 minus f2. We are going to solve one simple question from this concept, but before that I want to tell you the definition of sampling theorem. Sampling theorem says a band limited continuous time signal can be uniquely recovered from its samples provided its sampling rate is greater than equal to 2 FM samples per second. What is this 2 FM? This 2 FM is nothing but 2 F max. That is your the continuous time signal ka maximum frequency. What does this sampling theorem is saying? It is saying if there is a continuous time signal, okay, and I'm going to sample it like if I'm sampling it in this way, okay, and this is your transmission side, okay, and this is your medium, okay, this is your medium, and this is your receiver side, okay, this is your receiver side, and here you're transmitting a sampled format. There are other things that quantization and all these stages are there, but I'm telling you what is like very basic format. But इसके अंदर भी यहाँ पे भी काफी सारे process हैं, but I'm telling you in a very simple way so that you can understand what is the meaning of sampling theory. It is saying कि while you are transmitting a sampled value, you will be receiving the sampled value, no? So ये जो process है, this process is nothing but recovering the original message signal. The message signal. What is the message signal? This is the original message signal. Now here I need to recover the same signal, okay? Here I need to, if I am transmitting like a signal like this, here I need to recover the signal like this, and it is saying this recover can be done like properly. ठीक है, आपको ये recovering में पूरा 100% same result आएगा if and only if ये जो sampling आपने initially किया था उस sampling का frequency is greater than equal to 2 FM हुआ. तो सर FM क्या है? FM is the maximum frequency of this message signal. Maximum frequency of this message signal. We're going to have a detailed discussion in our communication subject. We'll be going to have a lot of things are there. Quantization process होता है, coding encoding होता है. There are so many things are there. We're going to have detailed analysis in communication, but here I'm going to tell you a simple method, that is sampling theorem. ठीक है, so sampling a band limited continuous time signal जिसका highest frequency or bandwidth is FM hertz. FM is nothing but a maximum frequency, and that can be uniquely recovered from its sample if and only if the sampling rate is greater than 2 FM.
यही है आपके सैम्पलिंग थ्योरम। नाउ अभी यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और एंड आलियास के लिए योर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इट हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ f1 माइनस f2. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. Look here carefully. It is saying x1t is given 2 cos 2 pi 10t, x2 is given 2 cos 2 pi 50t. It's saying find the sampling frequency so that 50 Hz signal is an alias of 10 Hz signal. सर 50 Hz मतलब ये 50 Hz है, ये जो 50 Hz सिग्नल बोला मतलब ये x2t को बोला ना. हाँ सर, ये जो 10 Hz का सिग्नल बोला मतलब ये x1t को बोला ना. हाँ बाबा हाँ. सर 10 Hz मतलब 2 पाई f, मतलब इसका मैसेज का फ्रीक्वेंसी है ना. हाँ सर, ये 50 हर्ज मतलब इसका फ्रीक्वेंसी है ना कि 2 पाई एफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. So 50 Hz and 10 Hz are nothing but the frequency of the respective signal. Now as we know, remember, as we know a cos, so if we replace t with nts, that is a cos 2 पाई f को f रहेगा, fm को fm रहेगा, fm को fm रहेगा. In place of t I'm going to replace nts, and in place of ts I'm going to replace 1 by fs. Now he is saying if this fs आपको ऐसे कोई fs का वैल्यू दो, फाइंड द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. आप fs ऐसे कितना होना चाहिए, fs ऐसे कितना होना चाहिए सो दैट ये 50 हर्ज और 10 हर्ज का सिग्नल आलियास क्रिएट करे. हमें पता है fs इतना होने के लिए f1 माइनस f2 का मल्टीपल होना चाहिए. Now that is what I am going to do. Fs is nothing but sampling frequency is nothing but equals to f1 minus f2, and we got the value 40 Hz. Now I'm going to find out if you put this 40 Hz value here in this expression 40 Hz. Now n को इधर ले आओ, n को इधर लेके fm को इधर ले आओ, n को इधर ले आओ. So यहाँ पे fm क्या है सर, 10 है सर. हाँ, तो यहाँ पे डिस्क्रीट का कितना निकला सर, 2 पाई बाई 4 निकला सर. 2 पाई बाई 4 मतलब वो कितना वैल्यू निकलेगा, मतलब 2 पाई इंटू 10 बाई 40, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2 समथिंग निकलेगा. एंड फॉर x2 यू विल ऑल्सो गेट समथिंग लाइक 5 पाई बाई 2. नाउ 5 पाई बाई 2 इज नथिंग बट यू कैन फाइंड एज द कॉज इज द पीरियड ऑफ 2 पाई, नो. So 5 pi by 2 is, it seems like बहुत ही scary, so just subtract from 2 pi, so you'll get pi by 2n only. So that means you can see कि both the signals are identical. x1 of t, x2 of t, both the signals are came out to be identical. तो हम लोगों ने बोला था ना identical कब कौन होता है, 2 पाइप के डिस्टेंस में होता है ना आइडेंटिकल. हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सोचा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो आइडेंटिकल हुआ मतलब x2t इज एन एलियास ऑफ x1t, क्योंकि ये लोग आइडेंटिकल हो गए ना, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद दे आर गोइंग टू रिपीट देयर बिहेवियर. दैट इज व्हाई आई कैन से दैट x2t is the alias of x1t. Okay, because by putting a sampling frequency value that is f1 minus f2, fs जो भी वैल्यू निकला उसी वैल्यू पे अगर हम सैम्पल करते हैं, दोनों को सैम्पल करते हैं विल गेट द सेम वैल्यू, सेम एक्सप्रेशन. दैट मीन्स बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. दैट मीन्स बोथ विल गोइंग टू दैट मीन्स x2t will go into alias of x1t. Simple है concept. Now let's get into Nyquist criteria. Nyquist criteria says कि सैम्पलिंग तभी होगा, ये जो आपने आप लोग यहाँ पे पढ़ा है ना, सैम्पलिंग में आप यूनिकली अच्छे से मस्त से रिकवर कर सकते हो अगर आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 2fm हुआ तो. सर इक्वल नहीं हो सकता, हाँ अगर इक्वल हुआ तो उसको हम बोलेंगे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. सर क्या है, तो हम नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्यों नहीं लेते, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लेते हैं. हाँ, उसका डिसएडवांटेज मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ. लुक हियर केयरफुली. सो द ड्रॉबैक ऑफ नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इज सेइंग कि अगर आप fs इक्वल्स टू 2fm ले लेते हो तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है, ये पाप है, ये पाप है ये. सर क्यों है सर, बताता हूँ. सम ऑफ द नॉन शिफ्टेड साइनोसोडियल सिग्नल प्रोड्यूस 0 सैंपल्स व्हेन सैंपल एट नाइक्विस्ट रेट.
सर हाँ, सर हाँ, सर ये क्या है, नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो। ही इज सेइंग कि अगर आप ऐसा किया ना, ऐसा अगर किया तो क्या होगा, तो जो आपका सिग्नल है ना, जो आपका सिग्नल है, लिसन टू दिस केयरफुली, सिग्नल है ना, वो सब सैंपल होने के टाइम में, इस सब सैंपल होने के टाइम में एक सिग्नल ना सैम्पलिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, मतलब वो टोटल वेस्ट हो जाएगा वो सिग्नल। सर क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो सर, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, आप एग्जाम्पल समझाओ सर। लुक हियर, that is the signal which is given as 5 cos 50 pi t 2 sin 200 pi t minus 2 cos 100 pi t. Now this is in a time domain. Now I'm going to let's find out what are the frequencies. सर ये 2 pi f के फॉर्मेट है, तो इसका fm का वैल्यू है 50 pi by 2 pi that is 25 हर्ज, एंड इसका है सर 200 pi by 2 pi that is 100 हर्ज, f3 का है 100 pi by 2 pi that is 50 हर्ज। ये सब है क्या, मैसेज जो आपका fm का वैल्यू, एम का वैल्यू मतलब मैसेज, मतलब एम नहीं, एम ये इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, सर इसका है, सर एक्स का है, तो ये होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। गॉट द आइडिया। सो दीज आर द साइनोसोडियल सिग्नल का कंटिन्यूस टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी वैल्यू है। अरे यही है ना ए कॉस 2 पाई एफ टी, तो यहाँ से एफ का वैल्यू हम लोगों ने निकाला ना, ऐसे करके। हाँ सर समझ गया, सर समझ गए। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सर 100 हर्ज, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू। हाँ सर, सो एफ एस इज इक्वल्स टू 2 एफ मैक्स, जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, सो वही पुट करेंगे। हाँ सर, एफ मैक्स की जगह पे 100 पुट करेंगे सर। ओह सर वी आर गेटिंग 200 हर्ज। हाँ, सो दिस इज योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाउ लेट्स पुट दिस 200 हर्ज एज, नाउ लेट्स यूज दिस 200 hertz value as a sampling frequency and let's do the operation. सर कैसे करेंगे सर, अरे कैसे करेंगे क्या, ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब में जाके इसे डिवाइड करो, मतलब नहीं समझा सर। अरे देखो इधर x of t was given like this, no, x of t was given like this. Now let's write down x of nts, it will be given like kitna, it will given like this 5 cos 50 pi into nts 2 sin। तो सर हम t के जगह पे nts डाल दिया ना, हाँ, और nts के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते n by fs, yes or no, n by fs, yes or no, हाँ सर, ts is nothing but equals to 1 by fs। हाँ, तो अभी जो fs है ना उसके जगह पे 200 पुट कर लेंगे। ओ, क्योंकि हम लोगों ने नाइक्विस्ट क्राइटेरिया लिया है। ओ सर आई गॉट इट सर। सो आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू यू विल सी दिस। सर क्या हुआ सर, ओ सर ये वाला जो टर्म है इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। सर कैसे सर, अरे 2 साइन पाई एन, साइन पाई एन क्या होता है, साइन का पाई एन का वैल्यू क्या आता है सर, जीरो होता है। हाँ, तो जीरो हुआ ना। सो वी कैन सी क्लियरली this value, this terminology and this terminology is giving a very good contribution, this and this, but this terminology not giving any contribution to our main expression. So that is why I can say, due to this Nyquist rate sampling, if you do sampling frequency which is equals to 200 hertz, that is equals to 2f max, due to this Nyquist rate sampling we lost the samples from sine term, we lost the samples from sine term। ओके सर, दैट इज़ वाई वी ऑलवेज टेक, अगर ये हमारा 200 हर्ज हुआ था ना, तो हम लोग को लेना चाहिए 210 हर्ज। तो उससे क्या होगा ना, अगर यहाँ पे 210 कर दिया ना, तो दिस वैल्यू विल नॉट गोइंग टू कम आउट टू बी जीरो। You understand? So that is why we always take fs is greater than 2f max. So whatever the sampling frequency value that we need to take, that has to be greater than 2f max. Otherwise वो Nyquist criteria हो जाएगा, और उससे we lost one entire expression. Okay. Thank you so much for watching this video, my dear friend. Please subscribe to this channel and do watch regularly. Don't skip a single video. Do watch on the next video lecture where we're going to the next video lecture will be completely dedicated to one single question. It's a very important question. It will clear a lot of concepts. Okay, till then, see you.